Good afternoon, everyone. Today we are going to have a session on a simple case study for NLP, natural language processing, which we have given as a micro project to our students. Just trying to frame a research paper for them. And this is what I would like to explain as the abstract, which I have written for that case study. So the case study is basically an agentic RAG-based NLP framework for context-aware and recipe-aware food recommendation system. Just to brief you about that, okay, there are a lot of recipes available online. Even if you put it on your LLM or any chat GPT, Gemini, about you ask about a recipe and you will get it. But here we are trying to make an NLP framework for context aware. That means that, for example, if a person wants a particular recipe, and that person has given certain constraints like I have an allergy problem, so if you're going to make a vegetable without tomatoes, that because tomato can have an allergy to somebody, okay, if some itching issues or pitta is increased as per Ayurveda, so tomatoes should not be included. So it is more like a NLP, means it is more like a human like touch to the recipes. For example, if my husband, he doesn't like garam masalas in the biryani or any of the sabji or maybe in the rice. Okay, so even if that sounds very delicious, I will never use that because he might have certain heart burning issues. Correct. So this is something which is personalized, and that is what we are trying to inculcate in this particular LLM. So the approach we are going to use is the RAG model. And why we are calling it as context? Because the same recipe with garam masala can be a very, very delicious item for somebody in the family, but same thing cannot be delicious for somebody else because of some health issue or personal taste or whatever it is. Then we are calling it as agentic. Okay, why we are calling it as agentic? Because we are going to use the agentic AI model, okay, for creating this LLM, because it sounds easy, but for internal implementation we will require a proper framework for that to get it coded and implemented. So food recommendation systems have evolved from static preference-based models into intelligent decision support system, requiring context awareness and adaptive reasoning. However, existing approaches rely on conventional machine learning and deep learning architectures that lack real-time context interpretation, dynamic knowledge interpretation, and explainable decision-making capabilities. So, we started with hard computing, then we started with soft computing, then we had machine learning, then we had advanced machine learning where we did deep learning, reinforcement learning. Okay, so you can watch my basic video on NLP on the YouTube channel. I'll also share the playlist in the description box. So from there, you can see the entire hierarchy. So latest, what the LLM is demanding, it is demanding the NLP based machine learning. NLP means more human-like, natural language processing, like you talk to a human, right? So a human will tell me, okay, please ये मेरा सब्जी बनाना, इसमें ये मत डालना, इसमें वो मत डालना, इसमें मसाला कम डालना, इसमें तेल कम डालना, and so on. Correct? So depending upon that, we will get the recipes. Now we are getting those recipes online. ChatGPT or any LLM is taking the recipes which we are already there. Of course, ChatGPT has become intelligent that it will also increase and decrease the measurements of, as I said, tel kam, namak kam, salt kam, sugar kam. But there's something more beyond, which I explained to you in terms of garam masala. So, and then, so we are incorporating NLP because of context aware. Correct. More context aware, explainable AI it will become. And we are incorporating agentic AI. Why agentic AI? Because in such a big framework, okay, if you incorporate agentic AI, it will give you a faster and a more efficient results. क्योंकि आपने एक चीज के लिए 4 लोगों को allocate कर दिया, right? So they all will do parallel processing, give you the data. Plus, sometimes you will have specialized
agentic AI for different purposes. For example, some person doesn't want a recipe. He just wants some subset of whatever is required. Okay, whether the nutrients value of this particular recipe, ये भी हो सकता है. तो वहां पे हमें रेसिपी का पूरा कॉन्टेक्स्ट अवेयर मॉडल नहीं बनाना है, वो ऑलरेडी अवेलेबल है. उसका हमें सिर्फ न्यूट्रिएंट्स कैलकुलेशन करना है. तो ये हमारा एक एजेंटिक एआई उसके लिए अलग रहेगा. अगर सब एक ही चीज करेगा तो मे बी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल एंड द फ्रेमवर्क will increase. That is why we are dividing it into agents. So this framework leverages autonomous AI agents to interpret context, retrieve relevant culinary knowledge, generalize personalized recipe recommendation, and constraints, the dynamic constraints, okay, such as dietary preferences, nutritional goals, ingredient availability, and temporal factors. So if you can see that यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हमारा है, हमने उसको 4 एजेंट्स, एआई एजेंट्स में कन्वर्ट कर दिया है. एक किस लिए? यूजर कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए, क्योंकि एनएलपी में अगर आप जो टेक्स्ट डाल रहे हो उसका मीनिंग क्या है, इनर हिडन मीनिंग क्या है. ओके, जैसे अगर कोई गुड मॉर्निंग बोल रहा है तो गुड मॉर्निंग के अंदर उसका इमोशन क्या है ये दिख रहा नहीं है ना. सो टेक्स्ट प्रोसेसिंग इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड in fact. So because same word can have multiple semantics and syntax, that is why. Second agent we can use for database connectivity and getting our culinary knowledge. Okay, and then third agent can be to generate personalized recommendations. So जो भी ये यहाँ से आपको डेटाबेस से मिला उस पे आपको खिचड़ी पकानी है on their particular requirement. And then finally कुछ कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, जैसे मुझे ये वाले इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए या मुझे यही रेसिपी चाहिए बट विद दिस न्यूट्रिशनल गोल. ओके, तो दिस टाइप. तो ये हमारे 4 ऑब्जेक्टिव्स फॉर ईच ऑब्जेक्टिव फॉर ईच एआई एजेंट. तो यहां से हमें ये, दिस इज नाउ आई एम प्रपोजिंग दिस इन दिस पेपर, राइट. यू कैन क्रिएट योर ओन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यू कैन क्रिएट योर ओन ऑब्जेक्टिव्स, यू कैन क्रिएट हाउ मेनी नंबर ऑफ एआई एजेंट्स डू यू वांट एंड व्हाट दे विल डू. So in this paper, I am representing that there will be 4 AI agents and their purpose is also mentioned in the abstract. Then the conventional food recommendation systems, they primarily deploy collaborative filtering, content-based filtering, or neutral recommendation ऑफ द ट्रेंड स्टैटिक डेटा सेट. तो हमारे पास एक नॉर्मल स्टैटिक रेसिपीज होंगे, करेक्ट. उससे आपको फूड रिकमेंडेशन मिलेगा और उसके स्ट्रैटेजीज क्या होंगे? कोलैबोरेटिव. मतलब हम लोग क्या करेंगे, 2 इंग्रेडिएंट अगर मैंने डाला तो डेटाबेस में वो सिलेक्ट स्टार और फिर कॉमा एंड जो भी आप उसमें कंडीशन डालेंगे उसके हिसाब से इट विल बी गिविंग यू कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग. कोलैबोरेटिंग में आप 2 टेबल्स को ज्वाइन भी कर सकते हो, लेफ्ट आउट को ज्वाइन कर सकते हो, उस तरीके से. कंटेंट, इट विल बी टोटली कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग, नॉट द कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, क्योंकि हमने उसमें कुछ सिमेंटिक्स नहीं ऐड किया है. सो इफ यू गो टू माय एनएलपी लेक्चर, we need to add a lexicon, then we need to add a syntax table, then we need to attach semantics to each word in the lexicon, then we need to create context free grammar, okay, using graphs and trees, and finally we convert the RAG, okay, for that particular agent or the objective, and the nodes will be our outputs. So while effective in pattern learning, these systems are limited. Okay, why? Because जो हमारे पास नॉलेज है वो एक्सटर्नल नॉलेज है, इसमें से कुछ इम्प्लिसिट डिसीजन मेकिंग नहीं बन रहा है, करेक्ट. सो और ये तो हो गई हमारी बात स्टैटिक डेटा सेट्स की. और ये स्ट्रैटेजीज कोलैबोरेटिव एंड कंटेंट बेस्ड और न्यूट्रल रिकमेंडेशन. न्यूट्रल मीन्स वी आर नॉट इंक्लूडिंग एनी कॉन्टेक्स्ट और इमोशन इन दैट. सो एनएलपी इज मिसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. और अगर सपोज हमने एग्जिस्टिंग एनएलपी यूज भी किया तो एग्जिस्टिंग एनएलपी जो है वो एजेंटिक एआई यूज नहीं करते, इट्स अ नॉर्मल एक्सप्लेनेबल एआई. तो इफ वी इनकॉर्पोरेट एजेंटिक एआई इन एनएलपी, दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैन बी अचीविंग अ हायर गोल, करेक्ट, हायर लेवल गोल. एंड बट इसमें हमारे को चैलेंज क्या आएगा कि सारे एजेंट्स को कोऑर्डिनेट करना. Okay, so we had discussed in one of the sessions, you can just go and search on my YouTube channel also, difference between centralized, distributed and parallel, correct.
तो ये जो कोऑर्डिनेशन है इसके लिए आपको ये सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर से बनानी पड़ेगी. सो आई वोंट टॉक मच अबाउट द थ्री सिस्टम्स, बट इन जनरल सेंट्रलाइज्ड एवरीथिंग इन वन प्लेस. करेक्ट. डिस्ट्रीब्यूटेड एक ही डेटा आइटम है, लेकिन हमने उसके लिए मल्टीपल प्रोसेसर अटैच किया है फॉर अ फास्टर. एंड वी कैन ऑल्सो कंसिडर वन प्रोसेसर एज वन एजेंट. ये तो अभी डिपेंड करता है. वी कैन ऑल्सो हैव couple of clusters into one agent depending upon किस टाइप का प्रोसेसिंग एक्टिविटी है. ओके. एंड पैरेलल मीन्स द डेटा आइटम इज डिफरेंट, द प्रोसेसिंग इज ऑल्सो डिफरेंट, बट डिस्ट्रीब्यूटेड में एक ही टाइम पे multiple processes are working for the same data item. So if there is a read operation, there can happen multiple processes, but if it's a write operation, it will go like a concurrent transaction. Whereas in parallel, it is more parallel systems, it is more like a साइमल्टेनियस ट्रांजैक्शंस. ठीक है. तो एक टाइम पे दो चीज पैरेलली चल सकती है, लेकिन कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस या डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क में हमें ऐसा दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन एट अ टाइम अगर राइट ऑपरेशन है तो इट विल बी गो कॉन्करेंटली, मैंने एक के बाद एक. ठीक है. सो ये जितने भी हमने चीजें डिस्कस की है, दिस इज अबाउट द ट्रेडिशनल सिस्टम्स एंड द लिमिटेशंस. ओके. सो एंड मैंने आपको सोल्यूशन भी इस टाइटल में ही दे दिया है. एनएलपी यूज करना है जो हमारे ट्रेडिशनल कन्वेंशनल कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग में नहीं है, और क्योंकि एनएलपी से हम उसको कॉन्टेक्स्ट अवेयर बना देंगे और रैग मॉडल उसको यूज कर देंगे. और दूसरा, एग्जिस्टिंग एनएलपी भी अगर हमने सिर्फ यूज किया तो हम इसको और एक लेवल ऊपर पे लेके जा रहे हैं बाय यूजिंग द एजेंटिक एआई. Okay, so I will stop this session over here. In this, I just wanted to highlight this micro project for our NLP. और एक छोटा सा ये माइक्रो प्रोजेक्ट है जिसका हमने एक एब्स्ट्रैक्ट अभी तैयार किया है, और उसमें टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट आर द कन्वेंशनल थिंग्स यूज्ड, what are the limitations, and what is the approach we are going to use. So next time we are going to discuss about the agentic architecture. ओके. ये सारी चीजें मैंने एब्स्ट्रैक्ट में डाली है, तो जब भी आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, ओके, वी हैव टू इंक्लूड ऑल दीज डिटेल्स टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द फ्लो ऑफ द पेपर. एंड एब्स्ट्रैक्ट से ही आपका पेपर जो है एक्सेप्ट और रिजेक्ट होता है, क्योंकि इफ दिस इज नॉट इंटरेस्टिंग एंड इफ ऑल डिटेल्स इन द पेपर आर नॉट डिस्क्लोज प्रॉपरली इन अ वेरी शॉर्ट मैनर, आगे पेपर का इंटरेस्ट, पूरा पेपर रीड करने का इंटरेस्ट वुड डेफिनेटली गो लो. Okay, so we will be discussing this agentic AI and the methodology used, of course, the aims and objectives, and lastly, the data set and the experimentation strategies for results and discussion. Okay, so that these things we will take in the next section and so on. If you just follow these lecture series in an entire micro project, I will be filling each section. Like next section would be literature survey. We will be discussing that. Then the proposed framework, model, each and everything what we have discussed in abstract, we are going to go in detail in writing also, so that you can also be a part of this micro project online. So thank you very much for your patience listening. You know, you can go through the channel for other lectures which are related, and also of some other subjects also which are related. So have a nice day. This is Dr. Ayesha Butalia signing off for this session.